Hello dear students, I welcome you all on our online learning platform Learnov8. Dear students, today in this session I am going to discuss the top 25 questions from the topic breathing and exchange of gases. I hope that after doing these top 25 questions you will get a major hand over this topic and you will say finally the chapter is done with all your concepts cleared. Okay? So without wasting further of the time, let's start with the question number first. On the screen the question number first is read as Bowman's glands are located in the. Okay, so we have the first question about the Bowman's gland. So where they are present. So dear students, while reading the question, the first thing that will strike to you if the students are listening to this word for the first time, Bowman's gland, the first thing that can strike to you is about the Bowman's capsule, and let me clear it that Bowman's capsule is a part of the excretory system, or we can say it's the first component of a nephron. Okay, so somewhere the topic is related to the breathing and exchange of gases. So Bowman's gland and Bowman's capsule is quite different. Bowman's gland is actually a type of nasal gland. Okay, so where it is present, that is asked here. Okay, let's read the first option. Olfactory epithelium, proximal end of uriniferous tubule, that means the nephron, anterior pituitary, you know this thing, female reproductive system of cockroach. Okay, so after reading the four options, we can say that this Bowman's glands jo hai, they are present in where? They are present in the first option, that is given as olfactory epithelium. Yes, these Bowman's glands are present in the olfactory epithelium. Okay, these Bowman's glands, if I say that you don't need to get confused about this thing, that these Bowman's glands, they are also called as, let me add further information about it, these Bowman's glands, they are also termed as olfactory glands. Olfactory glands. Okay, if I discuss about their structure, we call them as tubulo-alveolar gland. Okay, next if we discuss about their location, where they are found, we say that they are mostly found where? Yes, exactly, they are found beneath the olfactory epithelium. They are found beneath the olfactory epithelium. Below the olfactory epithelium, we have a region that we call as, can you name that? Yes, that we call as mucosa. Okay, so this is about their location. So we can say these are the nasal glands that are situated in the olfactory mucosa. Olfactory mucosa. This is their location. Is that clear to everyone? Now you will get a next question here that sometimes what is the function of this Bowman's gland? The function of this Bowman's gland is particularly to produce the mucus. Okay, they are going to produce mucus. Is that clear? So as to keep the lining moist. Is that clear to everyone? Again I am repeating that Bowman's glands जो है ये हमारे olfactory epithelium में पाए जाते हैं, beneath the olfactory epithelium actually ये पाए जाते हैं. So correct option is the olfactory epithelium here. I am adding that Bowman's gland का ही दूसरा नाम क्या है? We call also it as olfactory gland. और ये olfactory glands क्या होते हैं? These are actually special type of glands that are actually tubulo-alveolar in nature as per the structure, and where they are present, they are actually present in the olfactory mucosa, that is actually beneath the olfactory epithelium. Is that clear to everyone? Okay, so the correct option becomes number 1. Let's have the next question now. Effect of 2,3-DPG on the human blood is that. What is the effect of 2,3-DPG? What does 2,3-DPG stand for? 2,3-diphosphoglycerate. Isn't it? If you remember, this was a product, this was one of the product of
Glycolysis. Yes. And now we have a question here that if, let us assume that inside the blood this 2,3-DPG concentration is increasing. Okay. So what it will do? So what is the effect of 2,3-DPG on the human blood? First is it increase the affinity of oxygen for hemoglobin. Second is decrease the affinity of oxygen for hemoglobin. And third is it increase association of hemoglobin and oxygen. And fourth is it decrease the value of P50. So if we discuss, the correct option here becomes option number 2. Yes, that is due to presence of 2,3-DPG, what happens? There is decrease in the affinity of oxygen so as to bind with hemoglobin. Okay, तो हम ये बोल सकते हैं कि less oxygen can bind with hemoglobin if the blood has enough of 2,3-DPG, diphosphoglycerate. It's actually a product of glycolysis, if you remember. Initially we use it in the first phase of glycolysis. Okay, next question. Consider the following labels for mentioned structures and select the correct sequence of their arrangement. So now there are actually, we have been given some options like A, B, C, D, E, F. Okay, after reading these, the names, what they are, what A is explaining, B is explaining, उसके बाद हमें एक sequence यहाँ पे draw करके tick mark करना है कि कौन सा sequence correctly यहाँ पे explain करेगा किसको, हाँ, gaseous exchange को. अगर हमें इस इन ऑप्शंस को रीड करके ये बोलना है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, सो ए टर्मिनल ब्रोंकियोल, बी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, डी. सो लेट्स इफ वी डिस्कस दैट, इट्स एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग अस अ डिटेल्ड व्यू ऑफ ब्रोंकियल ट्री. ब्रोंकियल ट्री. So if you remember, we divide the bronchial tree into two parts. We say the first as the conducting zone and the last we call as the respiratory zone. Okay, let us see what further details are in the question. So first, if you remember that when we discuss about trachea, the trachea divides into two. So this was the trachea. Trachea जब divide होता है तो पहले शुरुआत होती है किसकी? Primary bronchi. It divides into two primary bronchi. So the first option we can say, first part is primary bronchi. Yes, primary bronchi further divide हो जाता है, isn't it? And forms the secondary bronchi. So we can say second is here. Secondary bronchi further divide होता है तो बनता है क्या? Tertiary bronchi. ठीक है, tertiary bronchi further divide होगा तो क्या बनेगा इनमें से? If you remember, it will lead to the formation of total, after that which part comes there, total pulmonary bronchioles. ठीक है, और उसके बाद total pulmonary bronchioles में अगर हम sequence में देखें तो then there starts this, the fifth will go for terminal bronchiole, and at the end we have this one, that is the respiratory bronchiole. Is that clear to everyone? Okay, so let's see here the sequence which that matches correctly. D, E, C, F, A, B. Okay, so the correct option is option number 1. Is that clear? Further, let's understand it here. This is a section. This is a diagram for the bronchial tree. The bronchial tree is on the whole divided into two parts. The first part we call as the conducting zone, and the second, as I told, is the respiratory zone. So what happens? The trachea first divides into how many parts? It divides into two parts. That is the primary bronchus, left primary bronchus and right primary bronchus. Please look to the diagram. This is the trachea. This is the left primary bronchus. And what happens? ये left primary bronchus जो है ये further divide हो जाता है दो parts में, दो components में. This is we call as actually, this further division leads to the formation of secondary bronchus, और ये secondary bronchus हमारा फिर से दोबारा से divide होता है and it leads to the formation of tertiary bronchus. Okay, finally after further dividing, what is being formed? Yeah, there starts a chain of bronchioles, and we have the first chain of first component of bronchiole that we call as terminal bronchiole. Then terminal bronchiole is the ending of this tract.
conducting zone, then starts what? Respiratory bronchiole, and finally this respiratory bronchiole leads to the functional unit of lungs, that is we call as alveoli. Is that clear to you? You have to remember all these things in a sequence. Okay, next question on the screen. Find out the correct match from the following table. Okay, so we have a table given here. You can easily see that this is actually, this table is based on the partial pressure of oxygen and carbon dioxide. So कॉलम ए में हमारे पास कुछ साइट्स दी गई है और हमें कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड में ये देखना है कि इन साइट्स पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे करेक्टली मैच हुआ है. ठीक है, ओके. सो फॉर दिस लेट्स टेक दिस रेफरेंस एट टिश्यू लेवल. देखिए हमारे पास जब हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दो साइड्स पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं. लेट्स टेक डिस्कशन दिस एलैबोरेटेड हियर. देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस है सर्कुलेशन का. ठीक है, एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज के लिए दो साइड्स इनकॉर्पोरेट होती हैं. एक तो हमारे पास ये साइड होगा जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, एंड सेकेंड इज दिस साइड. Okay, this side is what we call as actually the site at which gaseous exchange first takes place. This is the alveoli. ठीक है, alveoli and the blood capillaries. Clear? And on this side, that is the exchange here takes place again between the arteries, blood vessels, and now the next part is this tissue. क्लियर, यहाँ दो साइड्स पे गैसियस एक्सचेंज होता है. दोनों साइड्स पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, इन दोनों साइड्स पे जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी जाके गैसेस जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव हो जाएंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे. ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर की वजह से ही गैसियस एक्सचेंज होगा. एंड इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर, यू हैव टू रिमेंबर सम वैल्यूज very clearly, like you have to I will later on explain these respiratory volumes, these respiratory this pulmonary volumes, pulmonary capacities, and then there are some partial pressures, partial pressure of oxygen at which side. This is, I can say, a part of cramming, and you have to remember them. Okay, so if we look to this side, okay, यहाँ पे gaseous exchange किसके बीच में हो रहा है? This is the alveoli and these are the fine blood capillaries. ठीक है, यहाँ पे अगर हम एल्वियोलाई के अंदर का देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है? दैट इज 104 mmHg, यानी कि यहाँ एल्वियोलाई के अंदर हायर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का. और अगर हम अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का? दैट इज जस्ट 100 mmHg. ओके, पहला अगर हम यहाँ पे देखेंगे टिश्यू लेवल पे बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताया है? 45 mmHg. और ये इन्होंने कहाँ के लिए बोला है? दिस इज एट द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल तो हम यहाँ पे देखेंगे, isn't it? Yes, this is exactly correct. टिश्यू लेवल पे हमेशा जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है? वो 40 mmHg होता है. और अगर इसी साइड पे हम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है. दैट इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज 45 mmHg. यस, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तो अंदर डिफ्यूज हुआ है और यहाँ से बाहर जाने वाला है क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड. गॉट दिस थिंग? सो वी कैन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Coming to the next, that is in pulmonary vein. Pulmonary veins में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है. बताइए ये सही है या गलत है? ठीक है, पल्मोनरी वेन की बात करते हैं. तो पल्मोनरी वेन में हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो होगा 100 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg. So this means that यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी. This is a wrong. Okay, now coming to the next, that is systemic artery. Systemic artery में क्या होगा? Systemic artery में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी this is a correct directly incorrect statement. यहाँ पर भी इन्होंने पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गलत दे दिया है. कमिंग टू द फोर्थ, दैट इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में अगर हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg होता है. 104 फॉर
partial pressure of oxygen and 40 is the partial pressure of carbon dioxide. So let us see what's going to happen here. In alveoli, the partial pressure of oxygen 104 mmHg and that of carbon dioxide is 45 mmHg. बिल्कुल सही बोला है इन्होंने. ये पॉइंट से डाटा आपको लर्न करके रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल पे क्या है, पल्मोनरी वेन में क्या है, सिस्टमिक आर्टरी में क्या है. These all things you need to understand properly. Okay, so the correct option here becomes option number first and fourth. So 4 option is correct here. Okay, now let's discuss the next question. Question number 5, that is find out the correct match from the following. So we have to read these match and then we have to find out which of them is correct. For larynx, they have said that larynx is called as sound box. Yes, larynx is also called as voice box because larynx contains the vocal cords that vibrate to produce the sound. So we can say this is correct. Second, we have trachea. We say trachea is made up of complete cartilaginous rings. Sorry, it has been mistyped. So trachea में complete cartilaginous rings होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती. ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है इट्स अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन फॉर द ब्रोंक्यूल्स टू सर्वाइव इवन इफ दे आर नॉट फिल्ड विद एयर, इजंट इट. तो ट्रैकिया का गलत बता दिया. कंप्लीट की जगह वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट. सी शेप्ड होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स. ओके, देन देयर इज थर्ड एपिग्लॉटिस. इट्स एन इलास्टिक cartilaginous flap. Yes, exactly, this is quite clear. Then alveoli very thin irregular walled vascularized bag like structure. Very thin तो बिल्कुल सही है. irregular walled नहीं, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, मतलब ये गलत कर दिया. vascularized होता है, yes, it's richly supplied with blood vessels, but it's not a bag like structure, it's a sac like structure. Okay, so that means this is also incorrect. Now coming to the fifth option. Fifth option is about pleural fluid. You know these lungs are surrounded by pleura. Pleura is actually a double membrane like structure. There are 2 membranes, outer membrane and inner membrane, and these 2 membranes are separated with the help of a space that we call as pleural cavity, and inside to that cavity we have a fluid like substance. And what is going to happen, this fluid actually is present inside so that जब lungs contract या relax होंगे, so ये wear and tear की वजह से जो lungs की जो ये दोनों membranes है, parietal pleural membrane and visceral pleural membrane, ये damage ना हो. ठीक है, so we can say fifth is also correct. So let's mark which option suits to us. That is first, third and fifth. Option number 3 is the correct answer. Okay, on next question on the screen we have question number 6 now. That is cartilaginous rings in trachea are incomplete. Okay, again we have a same question but now it's asking a different concept कि cartilaginous rings जो है वो incomplete तो होती है लेकिन किस surface पे incomplete रहती है. Okay, you need to remember this thing that on the डॉर्सल साइड, जो हमारे पास ट्रैकिया का जो डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सल साइड पे क्या होता है कि बिकॉज बैक साइड्स पे अगर देखेंगे डॉर्सल साइड पे इस ट्रैकिया को देखें तो एट द डॉर्सल साइड इट हैज व्हाट, एसोफेगस फूड पाइप विद इट, इजंट इट. सो व्हाट हैपेंस, ये जो हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है दे आर एक्चुअली सी शेप्ड. बैक साइड्स इनका बिल्कुल अनकवर्ड होता है या फ्री होता है. ठीक है, इससे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक डायग्राम से देखकर एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज द ट्रैकिया, इज दैट क्लियर. अगर आप देखेंगे इस ट्रैकिया में क्या है कि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स है, दीज आर दी कार्टिलेजिनस रिंग्स, और इन कार्टिलेजिनस रिंग्स के बीच में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल लिगामेंट दैट होल्ड्स देम दैट वी कॉल एज एन्युलर लिगामेंट. एम आई क्लियर टू दैट? इफ आई डिस्कस अबाउट ए सिंगल क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें किसका, एक कार्टिलेजिनस रिंग का, तो आप देख सकते हैं कि डॉर्सल साइड पे ये बिल्कुल, दिस इज on the ventral side we can say it's complete, but on the dorsal, this is the dorsal side, dorsal side पे क्या है, it is incomplete. Okay, so what is going to happen, it forms a C-shaped structure and over to it अगर आप यहाँ पे clearly देखेंगे कि back sides पे एक और opening है and this opening is particularly for esophagus that we call as
food pipe. Clear? Okay, so we can say that the correct option for question number 6 is 1. Okay, done? Chaliye. Okay, so the next question. Question number 7, we have oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to right on decrease of. ये जो हमारे पास oxygen hemoglobin dissociation curve जो होता है, we say that it can shift to right, it can shift to left. Okay, depending upon the availability of different gradients or different substances. Like we can say pH value interferes with that, temperature also interferes with that, carbon dioxide concentration also interferes with that. So now we have this acidity, I can say. So now question is asking that if we plot a graph and we are saying that the slope of the graph is shifting towards the right side, what are the conditions for that? Okay, so first is acidity, second carbon dioxide concentration. Right shift होने के लिए acidity, decrease of acidity favor नहीं करेगा. Carbon dioxide, decrease of carbon dioxide concentration will not favor this. Decrease of temperature will not favor this thing. Okay, yes, this curve can shift towards the right only when there is the decrease of pH value. Is that clear? Okay, so we will say option number 4 is correct. Now question number 8. Okay, that is Adam's apple represents. What does the Adam's apple represent? Okay, you know what is exactly Adam's apple? It's the characteristic feature, or we can say it's actually a secondary sexual character in case of males. So now we are having a question that what does this Adam's apple represent? Which part of the larynx, because larynx is actually surrounded by different cartilage, and now the question is that which cartilage of larynx represents the Adam's apple. Okay, first is arytenoid cartilage of larynx, cricoid cartilage of larynx, thyroid cartilage of larynx. If you remember, we have this very important cartilage of larynx. If we look here, this is the very important thing that actually forms later on what जो protrude हो जाता है and it forms the Adam's apple. इसका नाम होता है क्या? We call it as thyroid cartilage. Okay, so we can say the correct option here becomes thyroid cartilage of larynx. ठीक है, Adam's apple में बहुत सारे cartilage होते हैं. You can also observe it here. Cricoid cartilage है, we have arytenoid cartilage, we have this most important thyroid cartilage. So what this thyroid cartilage does, it undergoes protuberance, it grows outwards. As a result, what is being formed? It is this Adam's apple is being formed. Okay, so the correct option here becomes option number 3. Please note it down. Then we have the next question, that is question number 9. Air is breathed through. ठीक है, air कहाँ से breathe हो जाता है? ठीक है, so यहाँ पे हमारे पास कुछ passage दे दिया गया है and we have to check out that which is actually the pathway for the transport of gases. Since first is trachea, then the lungs, larynx, pharynx, alveoli. Do you think this is correct? No, because lungs के बाद larynx का आना ही क्या हुआ? This is actually incorrect. Okay, next point we will discuss here. Nose, larynx, pharynx, bronchus, alveoli, bronchioles. यहाँ पे mistake कर दी, यहाँ पे mistake कर दी. Okay, then third, nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi. हर जगह पे correct sequence है, so this option becomes third. Still, let's read the question. Option number 4: nose, trachea, larynx, bronchi, pharynx, and alveoli. Do you feel this is correct? No, exactly. They have made a mistake. First they have represented trachea, then larynx. तो ये आगे से गलत हो गया. So the correct option becomes here option number 3. Is that clear to everyone? Okay, let's have the next question. Even here you can use this hint. Let me draw it here. First there is nose. From the nose the gases will enter.
So we call it is a passage or a pathway for the entry of air. Then we have this red lining that we call as nasal cavity. What is the function of this nasal cavity? Actually, it filters the air. Even there are cochlea that are actually, they act as little ACs, and even this nasal cavity provides moisture. Okay, it moistens the air that goes in. Even next, if we discuss, then we have this pharynx. Okay, pharynx, you know already, it's a point where the oral cavity meets to the buccal cavity. Obvious सी बात है, यहाँ से air जाएगा, फिर air कहाँ जाएगा? Larynx में जाएगा. जी हाँ, larynx is called as voice box. It helps in the production of sound. Yeah, then it will go to, from here it will go downwards to the trachea, and from the trachea it will divide into primary bronchus, and then later on primary bronchus के बाद मैंने already आपको bronchial tree बताया है, तो that route it will follow and finally it will reach to the alveoli where the actual gas exchange of gases will take place. Okay, next question. Which instrument helps in clinical assessment of pulmonary volumes? Okay, so which instrument, कौन सा instrument हम use करते हैं pulmonary volumes को define करने के लिए? You know, we have different types of pulmonary volumes, like we have tidal volume, we have inspiratory reserve volume, we have expiratory reserve volume, we have residual volumes, we have different types of pulmonary volumes. So if and all, we have to give a clinical assessment of any individual, that what are the actual pulmonary volumes for him. So how we can practically prove it? So we have a special type of instrument that we call as spirometer. Okay, that spirometer is used to detect the pulmonary volumes of any individual, and that technique we call as spirometry. Okay, so the correct option here becomes spirometer. Let's have a view here. If you observe that there is a patient and this is the technician, and what actually the technician is advising, you can observe that here the patient is there is a clip that's placed on the nose. इनकी nose के ऊपर एक clip लगाया हुआ है, ठीक है? And what this technician monitors, actually क्या किया जाता है कि इस patient को बताया जाता है, जब clip nose पे लगाया जाता है, पहले इस patient को ये बोला जाता है कि take a deep breath. ओके आप एक लंबी सी सांस लो, और उसके बाद फोर्सफुली आप जितना हो सके उतना आप एयर को ब्लो करो, जितना पॉसिबल आपसे हो सकता है आप उतना ब्लो करो. एंड दैट इज एक्चुअली, दैट रिकॉर्डिंग इज एक्चुअली डन ऑन दिस इज द स्पायरोमीटर, एंड इट विल गिव अस द एग्जैक्ट pulmonary volumes of that person. Is that clear? Okay, this technique is we call as spirometry, and the test is we call as spirometry test. Okay, next question. Exchange of bicarbonates and chloride ions between RBCs and plasma is called. तो RBCs और प्लाज्मा के बीच में एक्सचेंज होता है किसका? हाँ, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड आयंस का. आपके दिमाग में क्विकली क्लिक हुआ होगा. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, सिंस क्लोराइड आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, सो वी कॉल दिस शिफ्ट एज क्लोराइड शिफ्ट. बोहर्स इफेक्ट इज नोवेयर रिलेटेड. हेल्डेन इफेक्ट, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, जी बिल्कुल भी नहीं. लेट्स गिव फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कंबाइन विद, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? टिश्यू से आया. इट विल कंबाइन विद द वाटर. इनसाइड दिस इज एन आरबीसी. आरबीसी के बाहर हमारा प्लाज्मा है. विद द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे. सोडियम बाइकार्बोनेट पहले आयंस बनेंगे. ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस जो है, दे विल गो आउट, विल शो डिसोसिएशन. ओके, ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस है ये बाहर चले जाएंगे. इवन अंदर और बाहर प्लाज्मा से ये आरबीसी से छोड़ के गए हमारे पास ये बाइकार्बोनेट आयंस, और अंदर से वहाँ से कौन आएंगे? वहाँ से आए क्लोराइड आयंस. एंड इसी एक्सचेंज को, ये जो यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में जो ये एक्सचेंज हुआ, इस एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? दिस इज वी कॉल एज एक्चुअली क्लोराइड शिफ्ट. इजंट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The function of conducting part in respiratory system of humans is. कंडक्टिंग पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है ह्यूमंस में, उसका काम क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट का, ठीक है. कंडक्टिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ वी डिस्कस दैट कंडक्टिंग पार्ट हैज लॉट ऑफ फीचर्स. अगर हम बात करेंगे हमारे जो एयर को, हम एयर इनहेल कर रहे हैं,
उस एटमॉस्फेरिक एयर के साथ के लिए मॉइस्चर ऐड करना, आई मीन से ह्यूमिडिफाई करना, वो किसका फंक्शन होता है? इस कंडक्टिंग पार्ट का होता है। इवन अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे इस एटमॉस्फेरिक एयर के साथ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रैप करना। एंड इवन जो भी एयर बाहर होता है, जैसे अभी अगर हम विंटर्स की बात करेंगे, देयर इज अ कोल्ड एयर, ओके, सो कोल्ड एयर अगर हम डायरेक्टली इनहेल करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमारी लंग्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो उस एयर को मॉड्यूलेट करना अपनी हमारी बॉडी के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट हमारे लंग्स जो है कोलैप्स ना हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ दिस conducting part. Okay, so let us read the options. The first option is that it clears foreign particles. Yes, this is correct. Humidifies atmospheric air. Yes, and it brings the air to body temperature. That's because of these cochlea that are present in the nasal cavity. Yes, so we can say all of the above are correct. Okay, done. Question number 13 now. When there is no air in initial bronchioles, if the bronchioles don't have air, they does not collapse. Still then they don't collapse. It's because of, I have already discussed this question, that because of the incomplete cartilaginous rings, it's an important adaptation, because it helps it helps these bronchioles to survive even when they don't have air filled inside. Okay, so we can say the correct option is presence of lecithin, no. Presence of incomplete cartilaginous rings, yes. So the correct option is option number 2. Let's discuss the next question, that is question number 14. So the question number 14 here is inspiration can occur when. कब इंस्पिरेशन होगा, यानी कि इनहेलेशन कब होगा? इनहेलेशन तभी होता है कि जब कहाँ से गैसेस मूव करेंगे, व्हेन दे मूव फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर टू इनसाइड ऑफ द लंग्स। ओके, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी हायर, और इनसाइड का जो प्रेशर होगा हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो लेसर होना चाहिए, क्योंकि जब भी अंदर लेसर प्रेशर होगा तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। नेगेटिव प्रेशर विल एक्ट एज अ टाइप ऑफ सक्शन एंड इट विल पुल द गैसेस फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर टू इनसाइड ऑफ द लंग्स। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं इंस्पिरेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द atmospheric pressure. Is that clear? Okay, so the correct option here becomes pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. ठीक है? Next question on the screen, we have question number 15 now. Which of the following factor can affect the rate of diffusion of gases? Okay, since as we said that the diffusion of gases takes place at two sites, one was between the alveolar membrane and the yes, alveolar membrane and the blood capillaries. Okay, and the second side that we are discussing, that was actually again between the blood capillaries and the tissues. Okay, so what is the basic thing, since there is a site where the gaseous exchange is taking place, और वहाँ पे ये diffusion की वजह से जो gases exchange हो रहे हैं, there are lot of factors that will influence the rate of diffusion there, कि कितने gases जो है किस level कितने transport या exchange हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो membrane जितनी ज़्यादा thick होगी, उससे क्या हो सकता है, उससे ये होगा कि ज़्यादा thickness की वजह से rate of diffusion जो है वो कम होगा। ठीक है, इवन हमारे लिए बेटर है कि वो मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, जितनी कम थिन होगी वो मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इवन अगर हम बात करेंगे कि मेम्ब्रेन अगर हमारी परमिएबल नहीं है, ठीक है, गैसेस के लिए, तो वो भी हमारे लिए फैक्टर बन सकता है, वहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सो परमिएबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर। लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन, यस, लेसर द थिकनेस, more would be the rate of diffusion. Yeah, then solubility of the gases, exactly, more soluble the gases are, more would be the rate of diffusion. Third is pressure of the gases, yes, we agree with it, the more the pressure of the gases, the more would be the rate of diffusion, so the option becomes D, fourth, all of these. Is that clear? Okay, let's have now the next question, that is the conditions which are favorable for the formation of oxyhemoglobin.
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सी कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है? देखिए, फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन देयर इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. उनकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. लाइक partial pressure of oxygen is an important factor, partial pressure of carbon dioxide, this we can say, hydrogen ion concentration, this is also important. Even temperature has also a good role. So let's see that कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को हमें हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस, उनका क्या पैरामीटर्स, जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, किस फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, ठीक है. देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आई विल टेल यू दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू एंश्योर दैट देयर मस्ट बी मोर एंड मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन. रेस्ट बाकी के फैक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी decline. जैसे टेम्परेचर, lower temperature will favor the formation of oxyhemoglobin. Even if we discuss about lower hydrogen ion concentration, that will also favor. Even अगर हम partial pressure of carbon dioxide, जब obvious सी बात है, जब हम ये बोलते हैं partial pressure of oxygen must be higher, तो it means that partial pressure of carbon dioxide at this state must be lesser. So let's read the options. First option is partial pressure is higher, PCO2 is also must also be higher. So यहीं पर ही गलत हो गया. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई, कार्बन डाइऑक्साइड का लो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो. Yes, this is exactly correct. That is what I was discussing. So partial pressure of oxygen higher, carbon dioxide no, this is also incorrect. So the option becomes option number, correct option here is option number 3. Is that clear to everyone? Okay. Now let us discuss the next thing. Question number 17. So this is about a respiratory disorder and it's stating that the chronic disorder in which the alveolar wall, इसमें क्या है, alveolar wall जो है वो डैमेज हो रहे हैं, as a result alveolar wall is actually the respiratory surface and if they are damaging it means on the whole अगर हम बात करेंगे तो respiratory surface ही decrease हो रहा है. तो इसका मेजर कॉज जो होता है सिगरेट स्मोकिंग है और इस डिसऑर्डर का नाम क्या है? सिंपल इज दैट दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एम्फिसेमा. इट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अगर रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एम्फिसेमा. ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द स्क्रीन वी हैव हियर, mark the true statement among the following with reference to normal breathing. With reference to normal breathing. Okay, breathing means exchange of gases. It involves the two events. One is inhalation and second is exhalation. Okay, since अगर हम बात करेंगे inhalation के time क्या हो जाता है, the muscles get contracted and for contraction we need what, ATP, यानी कि एनर्जी हमें चाहिए. तो हम ये बोल सकते हैं कि inhalation is an active process, while as what happens at the time of expiration or exhalation, the muscles, all the muscles, intercostal muscles, phrenic muscles, extra intercostal muscle, whatever the muscles are being involved, they relax at the time of expiration or exhalation. So we will call that as passive process because that does not involve the use of ATP. So we can read the options here. We have the first option, that is inspiration is a passive process while expiration is active. No, inspiration is an active process whereas expiration is passive. हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट बनता है. Inspiration and expiration are active process. No, inspiration, expiration are passive process. बिल्कुल भी नहीं. So the correct option is option number 2 because it involves the contraction of muscles and that's why we call inspiration as an active process, while as expiration does not involve the expenditure of energy. Since here the muscles are relaxing, that is why we call it as a passive process. Is this clear? Okay, let's move to the next question, that is question number 18. So at which level of vertebrae of the vertebral column trachea divides and forms bronchus?
Okay, as just few slides earlier I have shown you the bronchial tree where I was explaining that this trachea gets divided into two bronchus, primary bronchus and secondary bronchus. So the question here is asking that this, if we take in reference with the division of trachea with respect to the vertebral column, so we have to say that at which level of vertebral column will this trachea divide. Okay, so you know already this is the vertebral column. So we have here cervical. We divide the vertebral column into 5 parts. We call the cervical, the neck region, thoracic 12 vertebrae here, lumbar 5, sacrum 5 but fused, and coccyx 4, and that is fused. So अगर हम यहाँ पे बात करेंगे thoracic vertebrae के 7 thoracic vertebrae के हिसाब से, अगर हम इसकी अलाइनमेंट अब कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, सो एट द 7 thoracic vertebrae this trachea actually divides into 2 components that we call as primary bronchus. Is that clear? Okay, so what would be the option now? 7 thoracic vertebrae. Okay, clear to everyone? Yes. Next question on the screen, that is question number 20. Herring-Brewer reflex is related to. This is a very simple question. So this is exactly we can say it's a reflex section, and it is actually operated when what happens? It's operated in response to what? In response to the carbon dioxide. So Herring-Brewer reflex is related to effect of pH on respiratory center. No. Effect of carbon dioxide on respiratory center. Yes. Yes, exactly. Its question option is option. This is a direct question. Effect of nervous or respiratory system. No, this is nowhere related. So the option becomes, correct option here is option number 2. Okay. So let's have the next question, question number 21 on the screen. So the question reads here, what happens in hamburger shift? Hamburger shift, you don't have to get confused here. Hamburger shift is just the another name for what? Yes, chloride shift that was operating between the RBC and the plasma, in which we have discussed already what happens. जो bicarbonate ions होते हैं that leave the, yes, that leave the RBC. Okay, and chloride ions enter into the RBC. कहाँ से? प्लाज्मा से. तो देखिए, let's read the statements. Bicarbonate ions move out from the RBC and chloride ions enter into the RBC. Chloride ions move out from the RBC. बिल्कुल भी नहीं. Yes, so we can say here it is. Correct option is first, that is bicarbonate ions. ये मैंने already discuss कर रखा है last पहले कुछ slide में. Okay, bicarbonate ions जो होते हैं, they leave, they come out from the RBC, and in spite of that, what happens from the plasma, what goes inside the RBC? Chloride ions go inside the RBC. That is what we call as chloride shift, or we can call it as hamburger shift. Is that clear? Okay. Now we have the next question here, that match the following and mark the correct options. So we are given some animals and we have to match their respiratory organs. Okay, so very simple is that if we discuss about earthworm, so what is the respiratory organ of earthworm? Yes, it's exactly moist cuticle, isn't it? Okay, for arthropods, you remember arthropods? Yes, insects, they respire through trachea. Okay, so it means we have A first, B fourth, and fishes, where do fishes respire? Respire through gills, so we can say it as option number C. And for birds or reptiles, they respire through lungs, so this is the option number D. So let's match the sequence here. A first, C, B fourth, so the correct option is option number 3. Okay, done. Next question. So the respiratory membrane facilitates the exchange of respiratory gases through diffusion. Yes, we agree with the respiratory membrane पे ही diffusion process के through gases exchange होते हैं. Now let's read further. Oxygen enters the deoxygenated blood through diffusion because,
ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से एंटर होता है, बाहर से एंटर होगा, कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेसर है तो बाहर हायर है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर वुड बी दिस डिफ्यूजन की वजह से बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अंदर सॉरी बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द gases will move from outside to the inside the deoxygenated blood. So now we have to give the statement what explains it. इसका मतलब क्या हुआ, partial pressure of oxygen in alveolar air and capillaries is 40 mm and 100 mm Hg respectively. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm Hg है, कहाँ पे, एल्वियोलाई में, और यहाँ पे हम जो कैपिलरी के अंदर मतलब हायर पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे किसका दिखा रहे हैं, हम यहाँ हायर पार्शियल प्रेशर कैपिलरी का दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल कंडीशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ डिफ्यूजन नहीं हो सकता. सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर का जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, दैट इज 100 mm Hg, और कैपिलरी के अंदर का पार्शियल प्रेशर क्या है, दैट इज 40 mm Hg. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. सही है कि नहीं, यस. एल्वियोलर एयर के अंदर का पार्शियल प्रेशर जब हायर होगा तभी जाके गैसेस जो है वो कहाँ जाएंगे, दे विल गो इनसाइड द कैपिलरीज बिकॉज दीज कैपिलरीज विल कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. Partial pressure of oxygen alveolar air and cap is 46 mm Hg and 40 mm Hg. No, again this is wrong. 40 mm Hg. Yes, this is exactly wrong. So the correct option becomes option number 2. Is that clear? Let's come to the next question now. That is question number 24. Okay, we are coming to the end of this session. Match the following columns. Okay, now we have some questions regarding the pulmonary capacities. Okay, so we have the first inspiratory capacity. Inspiratory capacity ka what does it define as? Okay, what we can define inspiratory capacity as? So total air a person, inspiratory capacity क्या हो गया कि एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद एक इंसान जो है कितना, एक कोई भी इंडिविजुअल जो है कितना एयर वो इंस्पायर कर सकता है, दैट टोटल अमाउंट ऑफ एयर इज वी कॉल एज एक्चुअली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इजंट इट? डू यू रिमेंबर? यस, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. सो वी कैन से दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट. For one we can say A. Okay, what is expiratory capacity? It would be just a reversal for it. So we can say it is just the total amount of total volume of air a person can expire after normal. Yes, this is for B. Okay, functional residual capacity that we call as FRC. सो FRC अगर आपको याद होगा, वी कॉल इट एज उतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी हमारे लंग्स में रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद कितना वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिडुअल कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ओके, सो फॉर सी वी हैव थर्ड एंड डी इज द वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी के लिए वैसी बात है, देयर इज लेफ्ट नाउ डी. वाइटल कैपेसिटी सिंपली क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है इन अ फोर्सफुल एक्सप्रेशन. ओके, एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद एक इंसान कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर जा सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टाइड वाइटल कैपेसिटी. सो द ऑप्शन हियर बिकम्स 1 4 3 2. Okay, next question, that is arrange the following in the order of increasing volumes. Okay, tidal volume बड़ा होता है, residual volume बड़ा है, inspiratory reserve volume बड़ा है कि vital capacity बड़ी है. ठीक है, वॉल्यूम से अगर हमें याद करना होगा तो अगर हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम बड़ा होगा कि हमारा वाइटल सिंस हम कैपेसिटी को ही देखेंगे तो द सीक्वेंस विल सिंपली से पहले क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा.
कैपेसिटी अगर है तो आपको पता है कैपेसिटी एक्चुअली इज फॉर्म ड्यू टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स, सो वी कैन से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. With this, we have completed the top 25 questions of this session. I hope you have find this video quite helpful. Thanks for watching. Thanks for staying tuned with Learnov8.